Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are continuing our old session on the issue of share capital. Yes, we are going to discuss in both the language, Hindi and English. तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आज के सेशन में हम कवर करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन एंड रिलेटेड जनरल एंट्रीज सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखना अकाउंट्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली जंप करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, वो मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जनरल एंट्रीज को अंडरस्टैंड करेंगे एज स्टैंडिंग जो भी कॉर्पोरेट है, ट्रेडिंग या इंडिविजुअल है। सो लेट्स बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन एंड व्हाट इट्स ऑल रिलेटेड टू द ओवर सब्सक्रिप्शन एंड द अंडर सब्सक्रिप्शन. So every company means a company which is going with decided to go with the public, those kind of company, they invite the public for subscription either for the shares or the debentures. Okay, so what they do, they issue the prospectus. I use one word, they issue the prospectus. And what is a prospectus? It is an invitation to the public for subscription. Okay, I'm writing these words because I want you to write whenever they ask in your examination or even while in the interview anywhere. You must have a good knowledge about these things and you do not forget even in the future. Okay, so company issue the prospectus, okay, for that particular subscription, but company had a limit that there should be a minimum amount. That is that minimum amount should be mentioned in the prospectus that must be subscribed, that means are taken over by the public. Okay, that should be before the any of kind of security allotment can be made. So the company does not receive sometime an equal amount what they want. For example, being a company, okay, I used next word is minimum subscription. Okay, means a situation when there is a minimum limit which a company has mentioned in the prospectus, that they must be that minimum amount should be subscribed by the particular company. Okay, so I told you that there is a situation that we didn't find the equal number what we want. We means I am here the company. Okay, so me being a company does not receive the equal applications of the number of shares for the which I offer to the public for the subscription. There may be two situations. So what are those situations? Over or under subscription. That means there is a situation I offer to the public. I am a company. Do not take me as a person. I am a company, offer to the public, please subscribe this much of shares. But there might be a two situation. Under subscription, don't worry, I will explain in detail. And this is the baseline, suppose. Okay, this is the point I want the public, but there is an under subscription and over subscription. Do not draw these lines. This is just for your understanding. In examination, you can draw this. That must be sufficient. Okay. So, under subscription and the over subscription. What is the situation of under subscription? You can see this means I being a company issue the shares. That means which is undersubscribed as per the applications, which means I received a less number of applications which I offer to the public for subscription. That means here I offer say 10, but I receive 8. That means I offer to the public to subscribe that particular shares, maybe 10 or 100, just for the purpose of your understanding, but I receive less, 8. That means a situation of under subscription when the company, that is me, receive a less application. I receive a less applications, less number of an applications which I offer to the public to subscribe for. So in this case, what is we being a company, I do not face any kind of problem regarding the allotment.
all those 8 people come to me because I issued 10. I have a 10 basket, but 8 people come to collect the basket, so I give everyone those. Still I remain with the 2 basket. So in this case I don't have any trouble, means the company does not face any kind of problem regarding the allotment, since every applicant will be allotted the shares they applied, because 8 people applied, I'll give it to 8 all of them, and I can proceed accordingly with the allotment of the minimum subscriptions when the criteria are met. Okay, so this is all about the under subscription. Under, that means I offered 10 but I got 8. No issue with me. I gave those 8 people 8 baskets. Still I remain with the 2, sorry. Got it? This is the situation of under subscription. What is over subscription? This is a situation when I receive a more number of application. That means I receive, instead of 10, say I receive 12. That means I receive more number of applications than I offered the shares to the public for subscription. In this case, we got a situation of over subscription. Now I get into a trouble because I have a 10 basket, but I have 12 people in front of me. Okay, so I being a company cannot allot more than shares what I already have, because if I have a pocket of 10, how can I distribute 12? So there can be a situations, there can be possible options which I can choose it and I can do. So they can be, I divided the options. In this case, I divided my options into 2 broad prospect. Okay, so there is one option and there is a second option. Okay, so in the first option, what I do, in the first scenario, I divide again, then I reject the excess application and return the money also. So I can write it just return and reject, or reject or return. Okay, it can be reject or return, it's much better. So reject and return scenario. Okay, so I can do that also, or I can use that money which I received, the excess application money, to do the further sums of allotment. So future allot, I'll discuss the journal entry and individual basis, don't worry. Or I do the pro rata allotment. Okay, these 2 scenario can be dealt with the oversubscription. So I'll deal each and every case individually. We'll discuss the journal entries also. So give me a moment to conclude in another language. Okay, तो हमने देखा कि भाई हमारे पास जो है कंपनी जो है जब पब्लिक को इनवाइट करने जाती है कि भाई आप शेयर्स को ले सकते हैं, आप शेयर को सब्सक्राइब करते हैं, तो उसके लिए कंपनी क्या है, एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है ताकि वो पब्लिक को इनवाइट कर सके, ताकि उनके शेयर्स को सब्सक्राइब किया जा सके. ठीक है, तो उस जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें कंपनी एक मिनिमम अमाउंट मेंशन करती है कि भाई इतना मिनिमम हमें सब चाहिए कि पब्लिक सब्सक्राइब कर ले. ठीक है, वो प्रॉस्पेक्टस में मिनिमम अमाउंट यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन होता है. क्या कंपनी हमेशा ही इक्वल जितना ऑफर की होती है उतना मिलता है? नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है कि 2 सिचुएशन देखने को मिलती है, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन. अब अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन सिनेरियो को समझते हैं. अंडर सब्सक्रिप्शन वो सिनेरियो है जब मैंने यानी कंपनी ने ऑफर किया 10 लेकिन लोग आए 8, तो मैं आराम से उन 8 लोगों को दे दूंगी, उन 8 लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी. ठीक है, सो दैट इज अ अंडर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन. यानी क्या हुआ, यहाँ पे अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ. मेरे को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है ना, वो कम नंबर में है जो मैंने पब्लिक को ऑफर की थी. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. 10 थे, 8 लोग लेने आए, तो उन 8 को मैंने दे दिया, फिर भी मेरे पास 2 बच गया. यानी कंपनी इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करी. अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि मेरे पास मैंने 10 दिए कि 10 है, लेकिन लोग लेने वाले 12 आ गए. अब तो प्रॉब्लम हो गई. ये हो गई सिचुएशन ओवर सब्सक्रिप्शन की. ठीक है, कि मेरे पास एप्लीकेशंस जो है ना, मैंने जितना ऑफर किया था ऑफर टू सब्सक्राइब किया था, यानी आपको दिया था, पब्लिक को दिया था कि सब्सक्राइब कर लो, उससे ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव कर ली. ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है ओवर सब्सक्रिप्शन की, और इसको हम 2 पार्ट में देखते हैं. पहला पार्ट हमारा ये होगा कि या तो हम कुछ लोग के पैसे को मतलब एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दें और उन्हें रिटर्न कर दें. ठीक है, या आपको उस अमाउंट को लेकर के कुछ को आप फर्दर अलॉटमेंट या कॉल्स पे दे दें. दूसरा सिनेरियो प्रो राटा अलॉटमेंट होगी. ठीक है, तो हम इन दोनों ऑप्शंस को डिटेल में जर्नल एंट्रीज के साथ डिस्कस करेंगे. ओके,
So let's begin with the return reject scenario. The case one, when we have to reject the access application money and return the money. So the first scenario is the rejection of excess application and money return. Okay, so in this case what we do, the we means the company, what they do, they reject the some of the applications for whatever the excess applications they received, and the letter of rejection is sent to the applicants that we are rejecting. Okay, and in that case the application money which we have being a company received from those applicants will refund them as a full amount. Okay, that means if I have a 10 basket, I cannot issue to the 12 people, I have to issue only the 10 people. So in that case, for those 2 people, I have to give back. So when I received those money, what I pass the entry? Bank account debit to share application. Hope you remember, because we received those amount against the application. Now for 2 people, I received the amount. Bank account debit to share application account. This is when I received. Okay, so I received it, but to those 2 people, because I'm not in full-fledged and I have to return it or refund it to the 2 people, what I have to do is to give them, those 2 people, the money back against what? For the shares they applied. So now the actual journal entry will be share application account debit to bank account. I hope you people understood this journal entry. Please never think to memorize this kind of journal entry. If you understood, it's never going to be trouble you in the examination with even some twist and turn by the examiner. So whatever be the refund amount or called excess money, okay, as per the demand of question, you return it against that particular exceptions. Okay, so whatever the application money you decided being a company to refund to those applicants, you pass this journal entry. Questions have a lot of twists and turns, but if you have a good understanding about these concepts, nothing will be trouble you. Okay, so you return it those amount, but there is a second situation when you use this application money, suppose towards the further allotment or any kind of calls. So there is a situation, we will mark it as a 1, and then in the second, what you can do is whatever excess money you receive as an excess application money, you decided to adjust it. Okay, you decided to adjust it to the sum due on allotment, or maybe the call depend on the fact and circumstances of the questions. Okay, so now you decided to adjust that excess amount on the application towards the allotment. Simple, very clear. Means now you decided not to return means against that share application to bank, not to bank but to the allotment. Simple entry, share application account debit to share allotment account. I hope you people are definitely satisfied with this journal entry, and please, my humble request, stop memorizing. If you ever did in your past, leave it in the past, but from now you have to understand. Kindly tell me what you think, what is the amount will be here? The excess amount of the application which you can adjust towards the allotment, only that much amount. So okay, so it can be calls also, depend on the fact of the cases. So if you have an application money received which is partially accepted against the applicants and which is the amount required for, so you can adjust towards the allotment and on the further calls, or you can also refund it. There are any situations you can do, but it's all depend on the demand of the questions. So, okay, but all these things now, it is also mentioned that the article of the company must authorize to the company that director may retain those excess money as a calls in advance and adjust when they falls due.
Okay, so that consent of applicant has to be taken either through the letters or by separate clause in the prospectus. So article should mention that a director can use this excess money as an advance and for the further calls. Okay, so company can retain this amount for calls also. Suppose allotment is done, okay, but company want to use it for the calls also. So then I said what article should mention? Article should authorize the director of the company to retain those excess amount and used it for the calls as a calls in advance. So what will be the entry if still amount is left? We will use it for the calls. So what can be entry? Share application account debit. Okay, because you received everything more in the application time, na? And now you decided to use it calls in advance. Hope you satisfied. Please be satisfied. Okay, so whatever be the excess application money which is left over, okay, after application, after allotment, okay, what is the excess amount? Excess amount after adjusting the application, allotment. Suppose something is said in your question that to refund a basic amount, so whatever is left will become here, okay, as a calls and advance. Hope you satisfy. So this adjustment of excess application money which can be retained as in calls in advance if the article association of a company authorize the director to retain that excess money towards the calls in advance and adjust when the calls becoming due. Hope you satisfy. This is the option 1. So kindly give me a moment to quickly conclude in the other language, then we switch to the option 2. ओके, तो पहले केस में ओवर सब्सक्रिप्शन में हम क्या कर सकते हैं? जब पहला केस है हमारा ओवर सब्सक्राइब का, तो हम जो एक्सेस एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुआ था यानी 10 की जगह 12, तो हमने एक्सेस एप्लीकेशन को जो है रिफंड कर लेना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है रिफंड होता है, कई बार अलॉटमेंट में यूज करेंगे या कॉल्स पे, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में डिमांड में दी होंगी। आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेना। जब आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो क्वेश्चन में जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न लें आप उसे बहुत ही ईजिली तरीके से हैंडल करने में कामयाब होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया करें, ठीक है। तो अभी क्या हमने क्या देखना है कि जो एक्सेस रिसीव है उसे रिटर्न करना है। भाई किसके लिए रिसीव किया था? एप्लीकेशन में रिसीव किया था। तो जब रिसीव किया था तो एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट किसकी वजह से? एप्लीकेशन की वजह से। ये था ना एंट्री, लेकिन अब रिटर्न करना है तो क्या कर देंगे? बस वही रिवर्स एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। सेटिस्फाइड हो? कितना अमाउंट जो रिटर्न कर रहे हैं, जो एक्सेस अमाउंट है सिर्फ वही अमाउंट जाना चाहिए, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है। आप एक्सपर्ट्स हो आप लोग, ठीक है। अब सेकंड सिनारियो ये हो सकता है कि कंपनी ने बोला कि चलो भाई ठीक है आप रिटर्न नहीं करो या रिटर्न कर लो कुछ अमाउंट आप अलॉटमेंट में यूज कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा? एप्लीकेशन में पैसे रिसीव किए थे, अब रिटर्न नहीं करना है, अलॉटमेंट में यूज करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेटिस्फाई हो रहे हो? केवल उतना ही अमाउंट जितना आपने एक्सेस है और अलॉटमेंट में यूज कर सकते हो, सेटिस्फाई हो रहे हो? वैसे कॉल में भी यूज हो सकता है, लेकिन कॉल में तभी यूज हो सकता है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ दी जो आर्टिकल है कंपनी का वो हमारे डायरेक्टर्स को ऑथराइज करता है कि भाई वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट के बाद, वो आप कॉल्स इन एडवांस की तरह रख सकते हो और जब जब कॉल्स ड्यूज हो उस पर आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके कुछ प्रोसीजर होते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, वो फुलफिल हो जाने चाहिए। तब जो शेयर एप्लीकेशन में जो भी अमाउंट बच रहा है उसे कॉल्स इन एडवांस की तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं। और एंट्री क्या होगी? भाई एप्लीकेशन के टाइम में मिले थे पैसे, एप्लीकेशन से ही एडजस्ट होंगे, तो शेयर एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस। सेटिस्फाई हो रहे हो ना? प्लीज अंडरस्टैंड करना, याद मत करना, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में सारी जनरल एंट्री इधर उधर हो जानी है। अंडरस्टैंड करेंगे, कोई डाउट होगा डिस्कस करेंगे, क्लियर है? Okay, so now let's move towards the option number 2, that is a pro rata allotment. So I'm just writing here the pro rata. What is a pro rata allotment here? So there are a situation where the company accept the application for subscription but on the partial basis. That means I'm not letting everybody, I'm entertaining everybody and not returning anybody. That means I'm entertaining each and every person but partially. That means me being a company, I does not allot the full number of shares to all those who applied, but I decided to give them in the form of ratios. In the form of ratios.
Okay, so that is a pro rata acceptance or pro rata allotment. For example, I have only 2000 shares and people come to me with the 5000 shares. Okay, then what I have received, I decided to give them on the pro rata basis. That means 5:2 ratio. So now I drop some, I being a company, drop some formula to accept those kind of application, making on the pro rata allotment. And applicants, I decided to allot them on the proportionate basis. Instead of refusing 2 people out of those 10 and accepting 10, I decided to accept all the 12 people, but on the ratio basis, some kind of ratio basis. So in this case, what I have to do, I have to adjust the excess money of application towards the allotment on the partial basis. So simply what I have to do, I have to pass a simple journal entry as share application, because during the application I received the amount, okay, to share capital account. With what? With obviously an excess money. Whatever the excess money I have received against the share application, that I transfer to the share allotment account with respect of that particular share. So I need to pass an application entry towards the share allotment. Clear? So kindly give me a moment to conclude in other language. सो पार्शियल एक्सेप्टेंस यानी प्रो राटा अलॉटमेंट है, प्रो राटा एक्सेप्टेंस है. तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने 10 शेयर ओपन किए थे लेकिन आए 12, तो अब मैंने पहले देखा था, मैंने आपको समझाया कि 2 को मैंने रिटर्न कर दिया. अब मैंने डिसाइड किया कि मैं 12 के 12 को एंटरटेन करूंगी, लेकिन एक रेशियो में दूंगी सबको, पूरे नहीं इशू करूंगी, किसी को भी पार्शियल फॉर्म में इशू करूंगी. तो कंपनी ने यहाँ पे डिसाइड किया कि फुल नंबर तो नहीं देने, प्रो राटा एक रेशियो के फॉर्म में सबको इशू करना है, यानी प्रो राटा के फॉर्म में एक्सेप्टेंस होगा. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन मनी में जो रिसीव्ड होगी उसे अलॉटमेंट के टाइम में एडजस्ट कर दी जाएगी. ठीक है, तो ये बेसिक सी जर्नल एंट्री मैंने आपके सामने शेयर की है. न्यूमेरिकल्स एंड वर्ड्स के साथ इसको हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और हम जो है फिगर्स को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, कि कैसे है. तो कंपनी के पास अगर आप देखें तो ओवरऑल 3 सिनेरियो बनते हैं कि भाई या तो आप एक्सेप्ट कर लो कुछ को फुल्ली और कुछ को रिजेक्ट कर लो, यानी 10 लोग को एक्सेप्ट किया, 2 को बिल्कुल घर भेज दो. ठीक, दूसरा मैंने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी. तीसरा मैंने क्या किया, दोनों का कॉम्बिनेशन ऑप्ट किया. अब डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कैसे डिसीजन मेकिंग कर रही है. आप कैसे देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपने वैसे करते चले जाना है. दैट्स इट. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न है आप बहुत इजीली तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं जब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो. सो आई बिलीव आज के सेशन से आपको सब्सक्रिप्शन, over subscription, under subscription clear ho. So what if the question in your examination to write an article or write a note on about the over subscription, under subscription, or pro rata allotment or subscription, so you can write a lot of things. You can describe about the prospectus, you can describe about the minimum subscription, you can describe about what is under subscription and over subscription, you can give their examples also, you can mention the journal entries also. Okay, so these are the sufficient thing you can write about that particular question. So that's why I want you to get ready to write the challenges of answer writing also. So keep practicing, keep working hard. See you in the next session more on commerce and accountancy. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.